Yeah, recording on. So we are on this chapter of organism and population. Nothing is deleted from this chapter. Very short and simple chapter. First part is discussing more about the ecosystem and ecology. Next part is discussing about the population and interaction. Population and interaction में हमने एक तो करीब सीखा है जिसका है symbiotic relationship. उसको बुलाते हैं mutualism. So that we are going to see. Okay, so just beginning with what is ecology. Logy is study, eco is what? Ecosystem. So ecosystem में तो सब आ गए ना, living organism, non-living organism, everything comes into that. Yes, so organism, population, communities, their interaction, how they are interacting with one another, everything in an ecosystem will be the study of the ecosystem. We will call it as ecology. Biotic and abiotic. Very good, Nandini. Biotic are the living factors. Abiotic are the non-living factors. So in ecologies, जैसे हमने बोला, ecosystem are comprising of the living factors as well as the non-living aspects of the environment also. ठीक है ना? So to define, we will define it as study of the interaction of organisms with each other with their physical environment. So this definition is the perfect definition wherein the living aspect is also coming and where is the non-living aspect. Abiotic and biotic factors both are coming into picture. So two line में ecology का definition ही आ गया. Okay, so just few terms that you need to know. अच्छा ये बहुत ही simple होगा लेकिन ये exam में पूछते हैं. Define population and then you write अपने मन का कुछ भी तो 0 marks मिलेगा. ठीक है, we know that you know what is population, but you have to write in the keywords for the definition of the population. ठीक है, तो एकदम सा random सा कुछ भी नहीं लिखना है. So what is population? All the members of the same species that inhabit a particular area. For example, if I talk about Santa Cruz में जितने भी लोग रह रहे हैं तो वो उतने area में, so number of people in that particular area will be the population of that particular area. ठीक है? So all members of the same species, same species, अलग-अलग species नहीं, that inhabited a particular area. What is a community? बहुत सारे population आएंगे in a particular area. All the population in a particular area will give rise to community. What will be ecosystem? Many communities coming together and the physical environment. So communities तो सारे biotic factors आ गए, living organisms and the non-living organism, that is the physical environment, temperature, soil quality, water, all that stuff, including both the non-living and the living components will be the ecosystem. तो कैसा होगा? Population, community and then the ecosystem. Okay, so ये hierarchy होगी. Yes, so you need to know the definition of all of them. मेरा cursor कहाँ गया? Like this. Okay, so many individuals come together, they give rise to population. Many population come together, they give rise to communities, and then different communities like the air also, water also, plants also, living organisms also will give rise to ecosystem. There are various with respect to ecosystem. You will have biomes which will form on the earth. आपने ये 8th या 9th 10th में किया होगा biome word. किया है कभी? Have you ever heard about no? ठीक है, आपका मिस हो गया होगा, मे बी आपको याद नहीं होगा या आपके टीचर ने मिस कर दिया होगा. बायोम्स क्या है? रीजन्स, इकोसिस्टम के रीजन्स. अभी जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, फिर जहां पे बर्फ गिर रही है तो स्नो इकोसिस्टम यू कैन से. यस, या तो रीजन्स बेसिकली बायोम्स. जैसे कि ट्रॉपिकल रेन, अभी फॉरेस्ट में भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं. एग्जैक्टली, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टाइगा रीजन. आपने ज्योग्राफी में किया होगा ये सब. टेम्परेट, डेसिडुअस फॉरेस्ट. Biomes are classified into these 7 categories. Then savannas, and then deserts, and then tundra region. ऐसा हो ही नहीं सकता आप ये सारे words never you heard about it in lower standards. Yeah, don't worry, you don't have to memorize this. This is just for you know, ये introduction है खाली, इस पे कुछ पूछा नहीं जाएगा आपको. Don't worry.
ठीक है, नहीं नहीं इसको करना भी नहीं है कुछ नंदनी, डोंट वरी अबाउट दैट, फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स व्हिच इज नोन एज द बायोम्स। तो ये तो मैंने बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड किया है, मतलब ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है, सो देयर आर रीजन्स व्हिच आर ओनली रेन फॉरेस्ट, देन देयर आर टाइगा रीजन्स, एंड देन देयर आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स जहां पे सिर्फ घासें होती है, ट्रीज वगैरह नहीं होते हैं। Then certain areas on the earth is only desert, desert, desert like that. ठीक है, so forget about that. अगर नहीं भी याद है तो कोई गम नहीं है, इसमें से कोई आपको कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में। Okay, हाँ, now we have to move to the first part of our chapter which is talking about habitat and niche. तो ये मैंने ना टेक्स्ट बुक का ही स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे इंक्लूड किया है because very important topic, either a definition or a one liner or the difference between हैबिटेट एंड निश के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, या डिफाइन हैबिटेट या डिफाइन निश, दो मार्क के लिए आ सकता है या एक मार्क का एमसीक्यू आ सकता है, तो इसमें मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए। सी आई एम स्ट्रेसिंग टाइम एंड अगेन, लास्ट के चैप्टर सिंपल है, एनवायरमेंटल रिलेटेड है, ऐसा नहीं कह रहे चलो सिंपल है हम बाद में कर लेंगे तो बहुत ईजी है, मैं एक बार रीड कर लूंगी तो मेरे को आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इसमें से मार्क्स आपके लूज होना ही नहीं चाहिए। ओके, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये चार चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आपको टू द टी आप लिख रहे हो और आपका वो मार्क्स आपके पॉकेट में है। क्योंकि डिफिकल्ट चैप्टर्स में क्या होता है, हम पढ़ते हैं, फिर हमको याद 100% पढ़ाई की है, याद 90% रहता है, लिखते हम 70% है, और उसमें से 10% कुछ रॉन्ग भी लिखते हैं, तो उसका जो परसेंटेज है कम हो जाता है। तो डिफिकल्ट टॉपिक्स का ये मसला रहता है, बट जो सिंपल टॉपिक है 100% याद है, 100% लिखा है, 100% मार्क्स मिलेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो इजी चैप्टर्स को और सिंपल चैप्टर्स को लाइट मत किया करो, वही चैप्टर्स है जिसमें हम स्कोर करते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जो टफ चैप्टर्स को लेके बैठ जाते हैं, अरे हमारा ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। वो कब करना है, जब आपको 99% श्योर हो जाए कि अब मुझे 99 मार्क्स आने वाले हैं 100 में से, तो वो 1% में एकदम टफ टॉपिक पे मैं मेरी जी जान लगा दूं। तो वो फिर जब आपका जिस दिन वो हो जाएगा कि मुझे 100 में से 99 आने वाले हैं, अब मैं एक्स्ट्रा या ज्यादा मेहनत के लिए रेडी हूं, तो आप वो चीजें करना। ठीक है, डिफिकल्ट में से तो एक दो सिलेक्टिव ही आते हैं, एंड ऐसे चैप्टर से बहुत कुछ आता है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, ओके, सो बिगिनिंग विथ हैबिटेट एंड निश। व्हाट इज हैबिटेट एंड निश क्या है? हैबिटेट देखो, एन एरिया जहां पे स्पीशीज रह रहे हैं, they are interacting with one another and also with the other factors, and then they flourish, then they grow, okay, they prosper. Niche, it's a more like a concept, a theoretical concept of how an organism live or survives in that environmental condition. Here it's like ऊपर से, let's say there is a walnut है, आप ऊपर से उसका शेल स्टडी कर रहे हो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, वी नो इट इज हार्ड, इट इज हैविंग सम लाइंस ऑन टू इट, इट इज ब्राउन इन कलर, बट व्हाट इज इनसाइड द walnut, how the inside part is protected because of this hard cover shell, like that. So something very internal. Niche is internal to habitat. Okay, that surrounding which we can survive into for generation or generation. Yes, Muskan. Okay, so niche is a concept of how an organism lives and survives. यहाँ पे the एक area है, this is more like a a very straightforward thing. एक जगह पे लोग species रह रही है, they are interacting with one another and the factors, and then they flourish. अब वो कैसे flourish कर रहे हैं, कैसे interact कर रहे हैं, that is something what we discuss in niche. ठीक है, ये NICHE है, बट हम इसको प्रोनाउंस निश करते हैं। हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस निश। आई टोल्ड यू ना, हैबिटेट निश इज इंटरनल टू हैबिटेट। हैबिटेट इज अ बिग अम्ब्रेला, और हैबिटेट के अंदर बहुत सारे निश आते हैं। ठीक है, निश डू नॉट कंटेन सच कंपोनेंट्स, बिकॉज वो ऑब्वियसली एक छोटे छोटे खुद ही कंपोनेंट है जो हैबिटेट के अंदर आते हैं। जैसे कि हैबिटेट में आप कर रहे हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, अदर बायोटिक फैक्टर्स, बट निश में क्या करोगे, हाउ द ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फूड चेन आ गया, फूड पिरामिड आ गया, तो वो सब निश में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वी विल डिस्कस एवरीथिंग एट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ओके, निश एक्सप्लेन्स व्हाई इज द हैबिटेट इज लिवेबल फॉर सम स्पीशीज, ऐसे कह सकते हैं। Yes, you can say that, Nandini. Good.
और क्या था, एक मिनट, Muskan is writing, it's like you have given one task that becomes our habitat, and then what all we do in that task is our niche. Very good, Muskan. Nice example. ठीक है. Habitat supports numerous species at one time. Niche will support single species at a time, because here we are talking one niche at a particular time. ये habitat पूरा बड़ा umbrella है, इसमें एक multiple niche can be there. So this niche will be concerned with its only about its circle, ना? It will not be concerned about other niche and other habitats. ठीक है? So it will support only single species at a particular time. Habitat में फिर काफी सारे species आ गए, फिर abiotic factors भी आ गए ना उसमें, तो everything will comprise this habitat. So habitat is more of a physical place, and niche is more like an activity. It's like a process. It's like a mechanism, or it's like a process which is performed by the individuals or the organisms. So habitat is not species specific. Niche is obviously species specific. It will support the growth, flourishment, prosperousness of a particular species. Habitat will cover everything. Okay. नीचे का थर्ड पॉइंट 1 2 3 ये वाला एट अ पर्टिकुलर टाइम. देखो हैबिटेट में हम ये डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, मैं जस्ट क्लियर एवरीथिंग. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट सेइंग? इंटरैक्शन एंड स्पीशीज विल लिव. स्पीशीज विल लिव, है ना. यहाँ पे देखो, हाउ एन ऑर्गेनिज्म, वी आर टॉकिंग एट अ टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. अच्छा ओके, फ्लो वाला, तो ये तो टाइम से रिलेटेड हो गया. देन अच्छा ओके, ये वाला effect of temperature, rainfall and other abiotic factors. So habitat will include everything, even the abiotic factors as well. Temperature, rainfall and soil, water. Niche, flow of energy from one organism to the other through the ecosystem. मैंने यहाँ पे example क्या दिया, food chain का example दिया. Let's say food chain के बहुत सारे examples हो सकते हैं. For example, you take a food chain of insects, or let's say you take a crop, a plant. Insects are dependent on, let's say, the plant. Then plant के ऊपर कौन dependent है? Can you give me some examples? Food chains, all of you know what's a food chain, or you are hearing it for the first time? I thought you know, all of you know food chain. If food chain लिया तो it will include more species ना, तो how will it be become species specific and single species at a time? Okay. See, how to put this? Good point, Nandini. Yes, let me just make this clear to you. See, here niche is supporting obviously a single species at a time. At a time, एक single species support हो रही है, ठीक है. Obviously, everything is interconnected. जैसे अगर आपने अभी grasshopper, frog, snake और bird का लिया, okay, these are different species, obviously. तो grass and उसके environment will become one niche. Grasshopper और उसके related उसका अभी let's say take grasshopper का food source is coming from grass. Yes, though when we take only grasshopper, so we are talking about only the grasshopper. Let's say grasshopper की जो family होगी, मतलब बहुत सारे grasshoppers, उनका एक particular niche हो जाएगा, but they have to be interconnected to something else for their dependence. For example, the grass, or if you take only frogs, they have a particular own species, ठीक है, but for their food source
and for their other requirements they have to depend on something else. For example, they have to depend on the grasshopper. That is why I gave the example of food chain. So here flow of energy. So here how is the energy getting flow? Energy कहाँ से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल को मूव हो रही है. ग्रास से एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूम ग्रास हॉपर को मूव हो रही है. फिर ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है. तो एनर्जी यहाँ पे नेक्स्ट उस पर फ्लो हो रही है. बट एट अ टाइम when you are considering only a particular species, then when you are discussing only about that, तो हम niche when we take niche into consideration. ठीक है. जब आप ये पूरा ले लोगे from grass to bird, that will come under habitat. But at a time when you are discussing the growth and development and reproduction of a particular species, let's say frog, you will talk about niche. ठीक है. यहाँ पे there will be effect of the temperature, effect of the rainfall, effect of the abiotic factors on the growth, survival, reproduction of the living organisms, because we are talking about a physical area. Niche mein we are only concerned mostly with the living factor more. लिविंग फैक्टर मोर. यहाँ पे देखो हम फिजिकल फैक्टर्स पे इतना स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं. No, it can support different species. Niche can be of different species. I told you na, ये पूरा timeline है habitat का. In this habitat you will have different niche. Okay, one niche for, let's say, frog family, one niche for birds family, one niche for the predators, for the carnivores or for the herbivores, etc, etc. ठीक है. Habitat will encompass all. Along with this, the abiotic factors also. ठीक है. See, in ecosystem, nothing we can discuss individually. Though we are segregating certain things, but they will be interconnected to one another. Like habitat is complete picture and niche is a step. Yes, very good, Shweta. Very good. Okay. So यहाँ पे we are focusing more on how the organism is able to survive with the help of the energy that it gets from one organism, and then it will then the energy will be transferred to one level to the another. So energy, when we are talking about the flow of energy, we will take one at a time, because we are talking about the process. Here it's a process. Here it's like, the entities, living entities, non-living entities, ऐसा. So that's the main difference. ये काफी mechanical है और ये काफी conceptual, and the how and the why. This is what. Habitat is, let's say, the what of the ecosystem, and niche is why and how, mostly the how of the ecosystem. ठीक है, what and how. So that's the major difference. ठीक है, तो ये अच्छे से करो. अच्छा, then depending upon the habitat and niche, they can be classified into, two types. Niche can be of two types. The whole niche, the fundamental niche, we call it as. Jesse, now some of your questions will be answered over here. Some minute doubts which are there. Fundamental niche and the realized niche. ठीक है. So fundamental niche में अभी जैसे आप ट्री, मैंने एग्जांपल ये लिया है पूरे ट्री का, तो ये भी अपने आप में एक निश है. लेकिन अगर मैं सपोज खाली इतने पार्ट पे फोकस करूं, द ब्लू पार्ट, this blue part of the tree is supporting only the blue birds for growing, for inhabitant. Blue part सिर्फ ये birds के लिए inhabitant है. For example, ये blue bird वाले. Okay, then a particular species of birds, let's say the woodpecker or something like that. Then this red part of the tree supports only a particular type of species of birds. Let's say the red birds. ये खाली understanding के लिए है, ये angry birds नहीं actually हो गए. ये सिर्फ understanding के लिए है, एक infographic type. Let's say the yellow part of the tree is supporting a different species of the bird, जो सिर्फ ऊपर रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं, वो नीचे नहीं आते हैं. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बीच के एरिया में रहते हैं, वो ना नीचे उतरते ना एकदम ऊपर जाते हैं. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो ज्यादातर नीचे की तरफ ज्यादा रहते हैं, वो ऊपर हाई तक नहीं जा सकते, जैसे कबूतर ले लो फॉर एग्जांपल. ओके, सो लाइक दैट. तो अब ये क्या होगा, ये ट्री अपने आप में, लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ ट्री इन अ स्पेसिफिक एरिया, सो दिस विल बिकम अ पर्टिकुलर निश.
अब उसके अंदर भी मल्टीपल निश हो सकते हैं, specific elevations you can say. Yeah. Okay, so you will have fundamental niche and specific realized niche in a niche, like that. So like this tree is a habitat, and then nahi, ye tree will fall under a habitat. You can take this as one part of the habitat, and then here are all the niche, they decide their own part in one whole. Got it, Muskan? Okay, see like this. So what's the difference between fundamental and realized niche? Fundamental is what, दोनों को sunlight और moisture चाहिए, but यहाँ पे everything will come into picture because we are talking of the bigger picture. Just have this in mind. Fundamental is the bigger basic picture, broader view, and realized is narrower, specific, detail kind of thing. Okay, so temperature, moisture, food, shelter, soil, composition, sunlight, all this factor will affect the fundamental niche. Realize में सिर्फ predation और competition ज़्यादा role play करेंगे, है ना? Predation and competition between the species of the, let's say, the birds you were talking about. Okay? सिर्फ दो लाइन का definition है आपके टेक्स्ट बुक में, आपको उतना ही याद रखना है. Don't stress much about it. Okay? Something new, so you will take thoda se time to actually absorb everything into your brain. This is just we have began with the chapter, तो थोड़ा time लगेगा आपको, you know, पूरी तरह से absorb करने के लिए. Little bit understanding you are having, more than good for me at this point of time. As and when we move forward, you will get more confidence about this topic. Okay, let me just see what is there ahead. So now the reasons for all the habitat and all the niche, I am taking you to the next slide. Any questions? You want me to take a recap or the revision, or it's okay? Can we move to the next slide? By the way, Aisha, thank you for your gift. Aisha ने मुझे एक छोटा सा gift भी दिया कल परसों. मैं क्या बोल रही थी? See, fundamental and realized niche. What are the factors? मतलब basically fundamental और niche में difference क्या है? Fundamental is a bigger picture, I was saying, bigger and broader aspect, and realized में छोटा component. देखो ना ये example से ही. Fundamental niche, you can take the example of like the whole tree. Basic requirement of the birds. Basic requirement of the bird क्या है? Tree. Bird का basic requirement क्या है कि भाई उनको tree चाहिए रहने के लिए. अब उसमें से कुछ बर्ड्स को टॉप एरिया प्रेफर्ड है, कुछ बर्ड्स को मिडिल एरिया प्रेफर्ड है, कुछ बर्ड्स को नीचे वाला एरिया प्रेफर्ड है, बट है तो क्या वो ट्री है ना, है ना? तो वो रियलाइज निश बोल सकते हो, मतलब उसको सिंपल टर्म्स में मैं बोल सकती हूँ स्पेसिफिक प्रेफरेंस. स्पेसिफिक प्रेफरेंस. सो द फंडामेंटल इज द होल थिंग. इट्स अ ट्री ओनली. The bird will reside onto tree only. It will inhabit the trees only. But now certain birds will have their, according to their nature and adaptation, they will require certain regions. They will prefer certain regions. So that will become their specific niche, their realized niche. Okay? So realized niche में what are the factors coming into picture? Predation and competition. जैसे कि जो ऊपर रहते हैं वो ज्यादातर प्रेडेटर बर्ड्स होते हैं, उनको नजर रखनी होती है अपने प्रे पे, तो वो ट्री के एकदम टॉप मोस्ट एरिया पे होते हैं, जैसे ईगल्स आप लोगों ने लिखा है ना. बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ फंडामेंटल ट्री. वो ट्री को सर्वाइव करने के लिए इट हैज वेरियस फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ना. टेम्परेचर, मॉइस्चर, फूड उसको मिल रहा है, शेल्टर तो यहाँ पे नहीं बात करेंगे हम, बिकॉज वी टुक द एग्जांपल ऑफ द ट्री. सॉइल, कंपोजिशन, हाउ मच सनलाइट, तो ये मतलब की चीजें हैं किसके लिए? ट्री के लिए एज अ ऑन अ होल. बट जो स्पेशलाइज्ड निश है उनको ज्यादा मतलब क्या होगा? प्रेडेशन और कंपटीशन से, कि उनका एरिया बचा रहे, लाइक दैट. Okay, so this brings us to the major abiotic factors like temperature, water, soil, what else you can say, air maybe,
Okay, come on. Now one by one I want all of you to read this point. We can begin from the first person top, or we can begin from the last person. नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे. Who will? तो समीक्षा और श्वेता में से एक जन स्टार्ट करो. तो जो स्टार्ट करेगा तो हम वो सीक्वेंस में जाएंगे. Come on. Okay, I will start then. Okay, Shweta. Major abiotic factors. First, temperature. The physiological functions and geographical distribution of organisms is governed by temperature. Temperature affects the kinetics of enzymes, BMR, basal metabolic rate, and other ecological actions in organisms. Thank you, Shweta. This is one factor. टेम्परेचर की वजह से काफी सारी चीजें connected है. The physiological function means how the rate of photosynthesis will be, for example, then what type of soil will be depending upon the temperature. So geographical distribution of the organism, कौन से organism को कौन सा geographical area पसंद है related to temperature. Okay, so temperature के हिसाब से there will be geographical distribution, and because of the geographical distribution you will see different type of organism residing in different temperate regions. Or they also affect the kinetics of the enzymes. Then BMR, basic metabolic rate of living organisms, है ना, हमारा भी एक BMR है. Then every organism has a basal metabolic rate, which is temperature is central to this activity, and various other internal physiological actions that take place in the organism. All these things are very much related to temperature. Okay, next person, Ghanshyam, will read water. Ghanshyam, is it possible for you to read? Yes. हाँ. Temperature. नहीं, water. Ecological function and geographical distribution of organism is governed by temperature. Temperature affect the kinetics of enzyme. पता है water, but वो मैंने कोई बात नहीं, करो. Kinetic of enzyme, BMR, basal metabolic rate, and other psychological action in organism. Water. Important factor influence the life of organism. The productivity and distribution depends on water. For aquatic organism, chemical composition, pH, salinity, and temperature of water are important. Thank you so much, घनश्याम. घनश्याम, आपकी आवाज मैंने कितने दिन के बाद सुनी. क्या हो गया था आपको इतने दिन से? आज हम बोले रीड करने के तो आप रीड कर रहे हो. क्यों ऐसा घनश्याम? सब ठीक है? पहले तो दीदी 6:30 तक तो घर ही पहुंचते. अच्छा, कॉलेज. ओके, समझ गई. ऐसे मतलब माइक खोलते ही नहीं जल्दी. अच्छा घनश्याम, आप यहीं पे रहते हो ना, पुणे, मुंबई में ना? यस, विवेक भी आया था. ओके. सॉरी घनश्याम, मुझे पता नहीं, तब मैं बोल रही हूँ घनश्याम इतना पहले कितना एक्टिव होता था, अभी क्या हो गया इसको, चुप रहता है. तो ठीक है, समझ में आ गया, कॉलेज है आप लोगों की. माय बैड. गणेश, आपकी कॉलेज, आप लोग बात पुणे वालों की कॉलेज नहीं है? दुर्वानकर कहाँ रहता है? दुर्वानकर, आई हैव नो आइडिया. दुर्वानकर, वेयर यू स्टे? दुर्वानकर और जयप्रकाश और पुष्पा, बाकी सबका तो पता चल गया मुझे. पुणे, अच्छा, दुर्वानकर भी पुणे. जयप्रकाश कुर्ला, वाओ जयप्रकाश. मुंबई का ट्रैफिक तो हाँ, मुंबई का ट्रैफिक आफ्टर 6. हाँ, it's very bad, I can understand. चेंबूर, वाओ, हमारा ही क्लास. जयप्रकाश लगता नहीं. अच्छा, पुष्पा तो काफी दूर रहती, भयंदर तो काफी दूर है ना पुष्पा. ओह, दुर्वानकर एंड गणेश वर इन सेम स्कूल. अच्छा, आपको बताया होगा, विवेक भैया ने बताया होगा. हम लोग प्लान करेंगे अभी आपके एग्जाम्स के बाद, मार्च के आसपास, आप सबसे मिलने के लिए. मतलब जो पुणे वाले हैं, तो मतलब समवेयर इन बिटवीन पुणे एंड मुंबई. तो मे बी अभी मैं मतलब एक ऐसा 1 डे पिकनिक टाइप्स ऐसा सोच रहे हैं. आप पता नहीं कितना पॉसिबल है. तो तो फिर समवेयर इन
बिटवीन पुणे और मुंबई में, तो पुणे के बच्चे भी होंगे, मुंबई के बच्चे भी होंगे. So let's see how whether we are able to plan that or not. तो एग्जाम्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद मजे आप लोगों की. हाँ बिल्कुल चाहिए. तो पहले अच्छे से एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ एग्जाम दो, पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स लेकर आओ फुल. अब बस यही दिन है. इट्स लाइक डू और डाई सिचुएशन. मतलब अभी एक्चुअली पढ़ाई स्टार्ट होनी चाहिए आप लोगों की. जनवरी एंड फरवरी एंड मार्च, बस 3 महीने अपने दे दो, बस दे दो. और फिर उसके बाद तो जितनी एंजॉयमेंट करोगे, 1-2 महीना आराम से रिलैक्स करना जब तक कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट नहीं होते एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, अपना जी जान लगा दो ये 2 महीने में सिंगापुर में. दान कर दो लाइक दैट अपने आप को. ठीक है. तो अच्छा, वाटर इज ऑल्सो अनदर फैक्टर. वाटर में वी ऑल आर अवेयर, विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट टेक प्लेस. ऐसे कितनी चॉकलेट, अच्छा चॉकलेट दिखा दो, आ जाओ अपनी चॉकलेट दो. यस यस श्योर नंदिनी, मुझे बता देना आपका कब है, क्या है, कैसा है, तो वी विल मेक अ प्लान आउट ऑफ इट. Okay, so water will affect the growth of the living organism. Okay, 28 March, nice. Then chemical composition will be affected because of the water, availability of water, pH, then salinity, salt concentration कितना होगा, everything. ठीक है, basically everything is interconnected. मम्मी रहने दो, वो यहाँ पर है चुपचाप. Okay, another factor is light. चलो next person Aisha, quickly. Light is important abiotic factor because the autotroph prepares its food by photosynthesis. Okay, very good. Light is important because all your autotrophic or एक मिनट ना जरा. So light is important because though it is an abiotic factor, all your living organism will depend upon light only for its for survival. So all your photosynthetic plants will require light for carrying out photosynthesis. Okay, and on plants other animals are dependent. ठीक है. Next person Durvankar, read. Related to light only. Animals the seasonal variations in the light intensity and photoperiod as cues for timing of forage, reproduction, and migration. Okay, so even animals also take light as a very important factor for their reproduction, growth, development, migration. When a particular area has a lot amount of light intensity, let's say desert region, so there are various animals which will migrate depending upon the seasonal variation of the light intensity. ठीक है, तो ये भी बहुत important factor है when we study about ecosystem. Then distribution of red, green, brown algae. ये example किसका है, aquatic system का है. तो on land हो गया, in water. So different depths of water depends on the light. Depending upon the light, so those layers of the oceans and seas will have different types of organisms depending upon how much light is penetrating into these layers of the oceans and seas. Okay, so that's there. So temperature, water, light, then final is soil. एक मिनट, अब दुर्वानकर के बाद कौन है, गणेश. चलो गणेश. हाँ okay, is it possible? Yes, Didi. Nature and properties of soil depends on climate, weathering process. The physical and chemical properties of soil determine the type of plants that can grow in a particular habitat. Yes. So though again soil is in non-living entity, but all your living entities, for example the plants, the animals which will live in a particular area, especially the plants, their growth and survival will depend a lot on the soil. और फिर किस टाइप के plants होंगे तो उस टाइप के animals होंगे. So it's everything is interconnected. So soil being one of the important factor, okay,
their physical and chemical properties will determine the type of plants that will grow in that area, and the plants growing in that particular area will determine the animals which will be there in that particular area. So everything is interconnected, right? Similarly, another example is the characteristics of the, so this is on land. So underwater also there is soil, right? Yeah, yes. Bottom sediments of aquatic environment determine the type of benthic animals that can live over there. जो soil, जो river bed or ocean bed or sea bed होता है, वहाँ पे भी soil है. In that you will see different creatures living. So even there, the type of that sediment will determine what type of animals will live over there. Okay? So these are the main abiotic factors which will affect any kind of an ecosystem prevailing in a particular area. Okay? Response to the abiotic factors. Organisms maintain a constant internal environment despite varying external environmental conditions. है ना? So irrespective of, more or less changing external environment, the organism will adapt and it will try to maintain internal temperature constant, जिसको हम बुलाते हैं homeostasis. So एबायोटिक फैक्टर्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे बदलते हुए टेम्परेचर एंड एवरीथिंग को? दे विल ट्राई टू मेंटेन अ कांस्टेंट बैलेंस ऑफ टेम्परेचर इनसाइड देयर सिस्टम. ठीक है? So depending on that, you have two terms that we need to know: regulators and something known as conformer. We will do these two and then we will stop for today. Regulators and conformers. I want next person, one person will read regulator, उसके बाद conformer. चलो कहाँ पे है? Maybe जयप्रकाश regulator, मुस्कान conformer. Come on. Oh, physics cancel हो गई. क्यों? चलो जयप्रकाश. Okay. Okay. मुस्कान आप read करो. Maybe रेगुलेटर्स रीड कर दो दीदी. हाँ. Okay, regulators maintain a constant body temperature and constant osmotic concentration despite change in the external environment. Example: birds, mammals, few invertebrates, etc. Okay. What do we understand by this? See, the name itself is telling you the type of animals. Regulators. These type of animals, these type of living organisms can maintain a constant body temperature, constant osmotic concentration despite of the changes in the environment that is happening. जैसे कि warm blooded animals जो होते हैं ना, जिनको हम what is a technical term? Polio-leucotherm, something like that. No, homeoleucotherms. Polio is polycoetotherm, something for cold-blooded animals. हाँ, it's a tongue twisting. How do you pronounce this? Okay, so homeotherms basically. Pao kilo. Yeah. So regulators are birds, mammals, invertebrates. Some of the invertebrates will be able to maintain their constant body temperature irrespective कि बाहर कोई भी कुछ भी चल रहा हो. ठीक है? Conformer क्या होंगे बेचारे? Which cannot maintain thermal and osmotic balance. ठीक है? Yes. एक मिनट, मैंने क्या लिखा? Example: 99% of animals and nearly all plants. Sorry, yeah, let me just display the next point. Conformer में plants आ गए ना?
plants. Yeah, forget about this. Huh? I don't know. Maybe by mistake I wrote this. Plants. है ना, कॉन्फॉर्मर में प्लांट्स आ गए. प्लांट्स को आप हार्श एनवायरनमेंट दोगे तो वो नहीं रह पाएंगे. लेट्स से जो लॉन्ग डे प्लांट्स है, आप उनको छोटी सी कम सनलाइट दोगे शॉर्ट डे प्लांट्स की तरह, तो दे विल नॉट सर्वाइव. Some of the plants will require very small amount of sunlight, जिनको short day plants बोलते हैं. आप उनको दिन भर धूप में रख दोगे तो वो नहीं ग्रो कर पाएंगे. समझ में आ रहा है? तो conformer example is near plants. Okay, they will not maintain their thermal and osmotic balance with the environment. Okay, naturally they are not capable of that. Aquatic animals में काफी ऐसे होते हैं. Osmotic concentration of the body fluid changes with that of the ambient osmotic concentration. Some amount, some of them, some living in the aquatic system will be able to some extent, maintain their body fluids in terms of the osmotic concentration with respect to the environment of the water which is there. Okay? Yeah, or else some might sink, you can say that. Then तो ये होगा regulator और conformer. और किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे ऑर्गेनिज्म टू द नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि कुछ लोग कुछ एनिमल्स अपना हीट एक्सर्ट करेंगे, हीट लॉस. सम एनिमल्स विल गेन हीट as a function of their surface area. जैसे कि some animals have larger surface area related to their volume. बड़े बड़े animals के बड़े बड़े surface area होंगे, तो उनको heat loss और heat gain करना comparatively will be a different story as compared to smaller creatures. Okay, so they will tend to lose body heat very fast when it is cold or outside. So they will be able to kind of respond to the changing abiotic factors in the environment. Okay, so they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. Small animals, therefore, example, small animals therefore are very rarely found in the polar regions. This point we are talking with respect to the response to the abiotic factor. कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जैसे कि अगर कोई एनिमल्स पोलर रीजन्स में रहते हैं तो आप रियलाइज करोगे पोलर रीजन्स में सब बड़े बड़े एनिमल्स रहते हैं, पोलर बेयर और ऑल दैट बिग बिग एनिमल्स जिनका बॉडी सरफेस एकदम हैवी और हेफ्टी होता है. But comparatively to the obviously, but comparatively to, let's say now you take a small creature, let's say take an ant or take a polar bear. अभी आप किसका surface area ज्यादा होगा? हाँ, हम ये कंपैरिजन कब करते हैं? जब दोनों एंटिटीज ना मोर और लेस 19-20 फर्क हो, उनमें उनके साइज में थोड़ा फर्क हो, ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस ना हो. अंडरस्टैंडिंग? ड्रास्टिक डिफरेंस ना हो, लाइक दैट. तो that is why in colder regions you will see big animals because उनका body वैसा बनाया गया है so that if it is too cold outside, so the amount of generating heat and releasing heat so that their body surface is warm, that is there, they can do that, they can adapt, they can respond to that changing dropping temperature. So small animals are rarely found in that particular regions. So this is just an example that I have included under the topic of responses to these abiotic factors. ठीक है? फिर कुछ organisms migrate कर जाते हैं, है ना? कुछ लोग तो adapt कर लेते हैं by either their regulator or something like conformer. Some organisms they directly migrate कि भाई उनको अच्छा ही नहीं लग रहा है तो वो चले ही जाते हैं वहां से. So they temporarily migrate from the unfavorable habitat to more favorable one. For example, birds are there जो migrate कर जाते हैं from stressful habitat to more hospitable area and then they return. जब अच्छा area अच्छा हो जाता है then they return. Fishes also, yes, fishes also, some deers and some herbivores also, you can say. Example देखो, during winter Keoladeo National Park in Rajasthan hosts migratory birds coming from Siberia and other extremely cold northern regions. ये तो आपने कभी मतलब काफी बार पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक में ज्योग्राफी के. Yeah. ठीक है. Then another response is suspend. तो एक response migrate था, दूसरा response suspend. Suspend क्या हो गया?
Avoid unfavorable environment by escaping in time. Escaping in time मतलब आप dormant stage में चले जाओ, hibernation stage में, है ना, जैसे plants करते हैं, seeds करते हैं. Yes, bacteria, they undergo cyst formation. Fungi, they undergo spore formation. अभी एग्जाम्स आ रहा है तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि या तो हम माइग्रेट कर जाए या हम सस्पेंड हो जाए या फिर हम ऐसा कुछ कर ले, है ना, हाइबरनेशन में चले जाए. अवॉइड अनफेवरेबल एनवायरनमेंट बाय एस्केपिंग इन टाइम. जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई एंड लोअर प्लांट्स, दे ईदर और द थिक वॉल्ड स्पोर, दे अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन. ठीक है, ईदर दे विल मेक स्पोर्स or they will undergo dormant stage, and once the favorable condition return, they will germinate, for example seeds and all that stuff. ठीक है, अभी कौन रीड करेगा? चलो 4 लोग बाकी है. एक मिनट मैं देख लूँ जरा कितना है. लेट इट जस्ट कंप्लीट. फिजिक्स नहीं है ना आपकी? अच्छा काम करते हैं, ये करते हो बस करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम अडेप्टेशन करेंगे. ठीक है, चलो मैं ही कंप्लीट करती हूँ नेक्स्ट क्लास में. नहीं, अरे अभी नंदनी टाइम लगेगा, अभी आधा है, काफी है. 1 घंटा और लगेगा. नेक्स्ट क्लास में हम होपफुली फिनिश कर जाएंगे इसको. ठीक है, अच्छा लास्ट देख लो आप, खाली लास्ट के पॉइंट्स मैं ही रीड कर देती हूँ, फिर बाकी के लोग नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे. In higher plant seeds, some vegetative reproductive structures serve to tide over periods of stress by reducing the metabolic activity. जैसे मैंने बताया, dormant stage में चले जाना. ठीक है, they germinate, then they come back. They germinate only when moisture and temperature return. Hibernation में जैसे winter sleep में चले जाते polar bears. Then something known as aestivation also, summer sleep. Some snails and fish, जब ज्यादा गर्मी होती है तो ये वैसे टेम्परेचर्स नहीं टॉलरेट कर पाते तो दे गो अंडर हाइबरनेशन. बट समर में हम बोलेंगे एस्टिवेशन एंड विंटर में हम बोलेंगे हाइबरनेशन. समथिंग नोन एज डायपॉज, अ पॉज बिटवीन, अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट. बहुत सारे zooplankton which are there under the sea in water. Zooplanktons are water creatures, small creatures which are under water. तो वो एक पॉज, लाइफ के पॉज में पॉज वाले स्टेज में चले जाएंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे वो चुपचाप एकदम डोरमेंट स्टेज में चले गए हो, तो लाइक सस्पेंडेड डेवलपमेंट. एंड देन दे कम अगेन व्हेन द फेवरेबल कंडीशन कम्स इनटू पिक्चर. यस, so in the next class we'll do adaptation, population, and population के बाद हमारे 4 से 5 interactions है, वो करेंगे. mutualism, commensalism and all that stuff. We'll be done with the chapter then. ठीक है, चलो. I'll end the class. Read the chapter from your textbook. Anything that you are finding it difficult, come with your question in the next class. We'll discuss that, and then we'll move forward and we'll try to finish this chapter. ठीक है, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दैट एग्जिट क्विज. मेरे को मार्क्स एंटर करने के, कल का लास्ट डेट. आप लोग एग्जिट क्विज लिखोगे नहीं तो मेरे को सबका 0-0 डालना पड़ेगा. ठीक है, 10-5 मिनट निकाल के कर लो. हाँ प्लीज. चलो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय. हाँ सीटी मतलब सीटी कर लो मुस्कान. ठीक है, चलो बाय.